Hello students, how are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and I welcome you all to our English class. As you know that we have started our Unit 6, that is the Unexplained, Section 1, Lob's Girl, and we completed the first part of the story. In the first part of the story, we talked about the Pangali family which lived in Cornwall, which is a fishing town in southeast England. They were total 6 people and they went on a beach in summer where they found the dog named Lob. He already had an owner whose name was Mr. Dodsworth, right? But he was in love at the first sight with Sandy, who was just 5 years old at that time. And he was very happy while playing with that girl. But they had to return to the Liverpool because Lob's master, Mr. Dodsworth, lived in Liverpool. But somehow Lob managed to run away from that place and he reached Sandy's house, that is in Cornwall. He almost walked for around 400 miles, that is from Liverpool to Cornwall, for the first time. When he came for the first time over there, Sandy's father, Bert, called up Mr. Dodsworth and he took the dog with him. At that time, Sandy was quite miserable. She was very sad, and her brother and sister, who were twins, named Tess and Tim, they were also very sad. But somehow, after 10 days, again, Lob ran away from his master's house and came over to Sandy's house. Now, this time he was quite hurt, he was limping, and he was bruised all over. Might be he might have fought with his enemy while coming to Cornwall, which is almost 400 miles, as I told you before. But this time the owner of Lob, that is Mr. Dodsworth, said that Lob wants to stay with Pengelly family, and so let it be like that only. I give you as a gift. And Lob was now staying with the Pengelly family. He was very happy and he was Sandy's pet dog. And in that way, 9 years passed by. Lob also changed and Sandy also changed. Sandy grew up as a teenager and Lob was getting older day by day. But one evening in the October, Sandy's mother told her to go to Aunt Rebecca's house because she was lonely, as her uncle Will Hoskins had gone out for fishing. So both of them decided to leave for Aunt's house. And while they were going towards Aunt's house, the wind was howling through the shrouds of boat drawn up on the hard. Now today we would be starting with the new part of this story. It's the same story, but this is the another part of the story. So let's see that. Okay. Put some cheerful music on, said Jean Pengelly to the nearest twin. So Jean Pengelly, her mother, Sandy's mother, after they left, both of them left, right? Lob and Sandy, they left for Aunt Rebecca's house. उनकी मम्मी ने उनको बोला कि put some cheerful music on, मतलब play some music which is good and happy. Don't put on some rock music loud. Which was why the Pengallis did not hear the truck hurtle down the hill and crash against the post office wall a few minutes later. Now what did Don do? He put some rock music and it was quite loud. And because of that, the Pengallis did not heard the truck which ran down without brakes. It was like it was running down the hill at full speed and it crashed into the post office wall. This thing happened few minutes later after the Sandy and dog left. But as the music was on and it was very loud, Pengelly family didn't hear that.
Dr. Travers was driving through Cornwall with his wife. He saw the sign that said steep hill, low gear for 1.5 miles, dangerous to cyclist. Dutifully, he changed into the second gear. Now, after this thing happened, at that time, Dr. Travers was also traveling through the Cornwall along with his wife. वो भी अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे. उन्होंने वो साइन पढ़ी जो हमने पहले भी रीड की थी, राइट, कि यहाँ का जो हिल है वो काफ़ी स्टीप है, एंड सो यू नीड टू स्लो डाउन योर vehicle, put it at the minimum speed for 1.5 mile. So dutifully means being a responsible citizen. डॉक्टर ट्रैवर्स ने क्या किया, अपनी गाड़ी सेकंड गियर में डाल दी और काफ़ी स्लो कर दी अपनी गाड़ी को. आई नोटिस्ड अ साइन ऑन द कोस्ट रोड दैट सेड फिशरमैन्स आर्म्स was 2 miles, said his wife Emily. What a narrow, dangerous hill. Oh, Frank, stop, there's a child by a wall over there. Now, उनकी जो वाइफ है वो उनसे बात कर रही है कि उसने एक साइन देखी थी. शी नोटिस्ड अ साइन एट द कोस्ट रोड जिसमें लिखा था कि फिशरमैन्स आर्म्स इज एट 2 miles, मतलब 2 miles अवे है वो जगह जहाँ पे पहले लॉब का ओनर भी रुका हुआ था, राइट. अभी वो बोल रही है कि ये कितना डेंजरस और नैरो हिल है, जैसे कि पहले लिखा था कि दैट हिल इज़ क्वाइट स्टीप. सो उसने अपने हस्बैंड को बोला जिसका नाम है फ्रैंक, यू नीड टू स्टॉप बिकॉज दैट इज़ अ चाइल्ड बाय द वॉल ओवर देयर. मतलब जो पोस्ट ऑफिस के वॉल के साथ जो ट्रक ने क्रैश किया था वहाँ पे एक बच्चा गिरा हुआ है. डॉक्टर ट्रावर्स जैम्ड ऑन हिज ब्रेक, दैट मीन्स जैम्ड ऑन हिज ब्रेक्स मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी को टोटली स्टक कर दिया था वहाँ पे, मतलब वहीं पे उन्होंने ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दी. अ लिटिल स्ट्रीम रैन डाउन बाय द रोड एंड हाफ in the water lay something that looked in the dusk like a pile of clothes. Now काफ़ी अंधेरा हो गया था, राइट. इट वॉज डस्क मतलब डॉन और डस्क, जैसे मैंने आपको बोला था डस्क मतलब द टाइम आफ्टर सनसेट. ओके, सो एट दैट टाइम when they came down there they saw that a little stream was passing by, और वहाँ पे पानी के अंदर कुछ चीज़ थी जो क्लोथ्स जैसा दिख रहा था. इट वॉज लुकिंग लाइक अ पाइल ऑफ क्लोथ्स. सो मिसेस ट्रेवर्स जो है वो बाहर आई तुरंत ही कार में से, इन अ फ्लैश मीन्स इन अ मोमेंट. लेकिन उनके हस्बैंड जो थे ही वॉज क्वाइट क्विकर देन हर. वॉट डिड द हस्बैंड से, नाउ ही वॉज अ डॉक्टर, राइट, जैसे हमने आगे पढ़ा. उसने देखा कि शी हैज़ बीन हिट, कांट बी मोर देन अ फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद कुछ 5-10 मिनट पहले ही उसको किसी ने हिट करके भाग गया है यहाँ से. देन ही रिमेंबर्ड, और उसने अपनी वाइफ को बोला, रिमेंबर दैट ट्रक दैट ओवरटुक अस हाफ अ माइल बैक स्पीडिंग लाइक द डेविल. सो उन्होंने देखा था कि एक ट्रक ने उनको ओवरटेक किया होगा, राइट, उनको क्रॉस करके आगे गया था. और वो कैसे स्पीड कर रहा था, इट वॉज स्पीडिंग लाइक अ डेविल, दैट मीन्स ही वॉज रशिंग लाइक एनीथिंग. एंड उसने सोचा कि ये वही ट्रक ने उसको हिट किया होगा उस लड़की को. क्विक फोन फॉर एन एम्बुलेंस, द गर्ल्स इन अ बैड वे, आई स्टे हियर एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, ही सेड शार्पली. उसने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि गो एंड कॉल एम्बुलेंस बिकॉज द गर्ल इज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन, शी इज़ bleeding too much, so we need to so he said that you go and give a call to an ambulance, I'll stay here and stop the bleeding. Dr. Travers was able to stop the bleeding, but the girl was lying in a queerly crumpled heap and he guessed she had a number of bones broken. So Dr. Travers stopped the bleeding, he was able to stop the bleeding. लेकिन जो लड़की थी मतलब, and that girl was none other than Sandy. She was lying in a queerly crumpled heap. That means she was totally unconscious and she was lying there in a very strange way. It was like a crumpled heap. मतलब पूरा क्रश करके रखा हो, जैसे कोई जैसे हम बोल सकते हैं कि हीप का मतलब होता है कुछ चीज़ जो एक के ऊपर एक लादी हुई होती है, राइट. सो वैसे ही कोई चीज़ पड़ी हो ऐसा लग रहा था. एंड ही गेस्ड सी हैड नंबर ऑफ बोन्स ब्रोकन, और उसके काफ़ी सारे बोन्स टूट भी गए थे. मिसेस ट्रावर्स वॉज
very quick, and in a few minutes an ambulance was wailing down the hill. एंड मिसेस ट्रेवर्स थी, वो भी काफ़ी क्विक थी. शी कॉल्ड द एम्बुलेंस, और कुछ ही मिनट्स के अंदर एक एम्बुलेंस वहाँ पे आ गई. द सायरन्स वर हर्ड ऑफ दैट एम्बुलेंस. इट वॉज वेलिंग डाउन, मतलब इट वॉज मेकिंग अ हाई पिच्ड साउंड. इट लिफ्टेड द चाइल्ड एंड दे स्पेड ऑफ टू प्लाईमाउथ. सो वो जो एम्बुलेंस था उसके अंदर वो बच्ची को उठाया, एंड द स्पेड ऑफ मीन्स they tried to move as speedily as they can to the Plymouth. And Dr. Travers went down to the police station to report. और जो डॉक्टर थे वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए. At 9:30 that night, Aunt Rebecca Hoskins was sitting by her fire when she was startled by a neighbor who burst in exclaiming, "Have you heard about Sandy Pengelly? Poor little soul. And they don't know if she is likely to live. Police have got the truck driver." Around 9:30, right? आंट रेबेका, जिसके घर सैंडी जा रही थी, वो अपने घर के बाहर फायर के पास बैठी हुई थी. एंड एट दैट मोमेंट ओनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय द नेबर. मतलब जो बाजू में नेबर थे वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे. एंड शी एक्सक्लेम्ड एंड शी वॉज सरप्राइज्ड. स्टार्टल्ड मीन्स शी वॉज सरप्राइज्ड बाय द नेबर हु सेड कि did you hear about Sandy Pengelly? She is poor little soul because she met with an accident and nobody knows whether she would live or not. मतलब वो रहेगी ज़िंदा या नहीं वो भी नहीं पता. और जो पुलिस है उन्होंने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है, मतलब जिसने उसको हिट किया था. द ड्राइवर हु क्रश्ड हर, दैट वॉज कॉट बाय द पुलिस. Horrified Aunt Rebecca went down her brother's house. She found the family with white, shocked faces. So now Aunt Rebecca was quite horrified. She was afraid and she was frightened, and she went down to her brother's house. So she found the family with white, shocked faces. सबके ही faces काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे. उनको भी बाद में पता चला, राइट? पहले तो उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है. Bert and Jean were about to drive off to the hospital where Sandy had been taken, and the twins were crying bitterly, and Lob was nowhere to be seen. और बर्ट और जीन थे वहाँ पे, मतलब उसके फादर एंड मदर सैंडी के. दे वर अबाउट टू लीव फॉर द हॉस्पिटल जहाँ पर सैंडी को रखा गया था. और जो उसके ट्विंस थे, राइट, सैंडी के ब्रदर एंड सिस्टर, दे वर क्राइंग बिटरली, दे वर क्राइंग हार्ड. एंड जो उसका डॉग था लॉब, इट वॉज नोवेयर टू बी सीन. वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था. Oh, if only I had never invited the poor child, wailed Mrs. Hoskins. So Mrs. Hoskins को काफ़ी बुरा लगता था, and she was crying with grief that if she had only not invited that girl, she might be safe at her home. उसको ऐसा लगा कि अगर मैंने उसको नहीं बुलाया होता घर पर तो अभी वो सेफ होती. That night seemed to last forever. Obviously, right? अगर किसी को कुछ लग जाए अपनी फैमिली में, या फिर उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाए कि वी डोंट नो वेदर शी वुड लिव और डाई, सो दैट नाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. इट वुड सीम लाइक इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. मतलब ये जो अंधेरा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा. द ट्विंस क्राइड देमसेल्व्स टू स्लीप. और जो ट्विंस थे वो रोते रोते सो गए. दे वर क्राइंग सो मच दैट दे फेल asleep. Dawn came home very late. Bert and Jean sat in a waiting room of the Western Counties Hospital. But Sandy was unconscious and there was no Lob. Now, Dawn घर पर काफ़ी लेट आया. He also went to see Sandy. और बर्ट और जीन, उसके जो पेरेंट्स थे, वो वेस्टर्न काउंटीज़ हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे. एंड दे वर वेटिंग फॉर सैंडी टू गेन द कॉन्शियसनेस. But she was unconscious for the whole time, and Lob was nowhere to be found. At noon next day, Dr. and Mrs. Travers went to the Pengelly cottage to inquire how Sandy was doing, but the report was gloomy, still in a very serious condition. So next day, जिन्होंने बचाया था, right, Dr. Travers and Mrs. Travers, वो लोग पेनगेली कॉटेज गए पूछने के लिए कि सैंडी कैसी है, how is she doing now. But the report was gloomy. That means it was sad. Report कैसी थी? Sad थी. Still in a very serious condition. मतलब
सैंडी की जो कंडीशन थी अभी भी क्रिटिकल थी. शी वॉज नॉट स्टेबल एंड nobody knew whether she would live or not. Okay, now let's see the next part of the story. The Western Counties Hospital is a large one, but by that afternoon it became noticeable that a dog seemed to have taken up position outside the hospital with the fixed intention of getting in. Now ये जो hospital थी जहाँ पर सैंडी को रखा गया था, that was quite big one. But by afternoon it became noticeable. मतलब everybody had noticed that there is a dog who has taken a position outside the हॉस्पिटल्स मेन डोर या मेन एंट्रेंस है जहाँ पे उसके बाहर एक डॉग ने पोजीशन लेके बैठा हुआ है विद द फिक्स्ड इंटेंशन ऑफ गोइंग इन. मतलब व्हाट वाज हिज इंटेंशन, वो डॉग का इंटेंशन क्या था? ही वांटेड टू गो इनसाइड द हॉस्पिटल. समटाइम्स ही वुड गेट अ लिटिल वे इनसाइड बट फर्मली टर्न्ड आउट अगेन. Sometimes the guard at the main entrance offered him a bit of sandwich, but he never ate the sandwich. So जो डॉग था वहाँ पे वो ट्राई कर रहा था किसी तरह अंदर जाने का, और अगर उसको थोड़ा सा रास्ता मिलता ही माइट मूव इनसाइड लिटिल बिट एंड देन अगेन कम आउटसाइड. और वहाँ पे जो मेन एंट्रेंस पे गार्ड था वॉज नॉट अलाउिंग द डॉग टू गेट इनसाइड. ही ऑल्सो ऑफर्ड द डॉग सैंडविच बट ही वॉज नॉट रेडी टू ईट दैट. At tea time, Granny Pierce came through the pouring rain to bring a flask of hot tea to her daughter and son-in-law. So उसकी जो grandma थी सैंडी की, right? She came during the tea time to the hospital. और उस वक्त क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. Pouring rain, that means it was raining outside. At that time, Granny came to give a flask of hot tea. Flask means thermos, right? जिसके अंदर चाय या कॉफ़ी या कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं और वो गर्म रहता है. सो ग्रैनी केम अलॉन्ग विद दैट फ्लास्क फॉर हर डॉटर एंड सन इन लॉ. डॉटर मतलब जीन एंड सन इन लॉ मतलब बर्ट. वाई ब्लेस मी एक्सक्लेम्ड ओल्ड मिसेस पियर्स, दैट्स लॉब, यर लॉब, लॉबी बॉय. लॉब रैन टू हर वाइनिंग. सो शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी लॉब. वहाँ पे जो डॉग खड़ा हुआ था उसको देख के उसे लगा कि दैट इज़ सच अ लवली कोइंसिडेंस दैट लॉब मेट हर ओवर देयर ओनली. और उसको लगा कि वो लॉब है और वो लॉब को बुलाने लगी. एंड लॉब ऑल्सो रैन टू हर, राइट? वाइनिंग मतलब द डॉग वॉज ऑल्सो क्राइंग. इट वॉज मेकिंग दैट साउंड ऑफ क्राइंग. आई एम सॉरी मैडम, यू कांट ब्रिंग द डॉग इन हियर, द गार्ड सेड. जो एंट्रेंस पर जो गार्ड बैठा था उसने क्या बोला? दैट यू कांट ब्रिंग द डॉग हियर, डॉग्स आर नॉट अलाउड. मिसेस पियर्स वॉज अ वेरी डिटर्मिन्ड ओल्ड लेडी. शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड. दैट मीन्स वट एवर शी डिसाइडेड शी यूज टू डू दैट. वो अभी उसने जब डिसाइड कर लिया है कि शी वॉन्ट्स टू टेक द डॉग इन साइड द हॉस्पिटल, देन शी इज गोइंग टू डू दैट. ओके, नाउ सी हियर यंग मैन, दैट डॉग हैज़ वॉक्ड 20 miles फ्रॉम St. Killen to get to my granddaughter, and he ought to have his rights. He ought to get to see her. Do you know, she went on bristling, that dog has walked the length of England twice to be with that girl, and you think you can keep him out with your fiddling rules and regulations? So Mrs. Pierce was very angry because the guard was not allowing her to take the dog inside. और इसीलिए उसने उसको समझाने का ट्राई किया कि सी यंग मैन, ये जो डॉग है वो अराउंड 20 miles चल के आया है सेंट किलन टू मीट हर ग्रैंड डॉटर, और उसको अपना हक मिलना चाहिए. ही ought to have his rights, right? He ought to get to see her. That means he has the right to see that, see Sandy. फिर उसने वापस उसको बताया. She went on bristling. Bristling means kind of tense and speaking in full speed, you can say. Sorry. That dog has walked the length of England twice. That means as you know कि dog पहले कितनी बार, 2 बार भाग के आ चुका था, right? Around 400 miles, है ना? तो वो मतलब ऐसे ही बोल रही थी बढ़ा के थोड़ा कि dog को सैंडी के साथ रहना था, and that's why he walked around twice the length of England. Now that might not be true,
बट सिर्फ बढ़ा बोलने के लिए उसने बोल दिया कि उसको सैंडी को ही अपना ओनर बनाना था, इसीलिए वो इतना लंबा डिस्टेंस चल के उसके साथ रहने के लिए आया था. And you think you can keep him out with your fiddling rules and regulations? How can you even imagine कि तुम अपने rules और regulations को लेकर इसको बाहर रख सकते हो? Finally, the medical officer relented. It's strictly against every rule, but as it's such a serious case, we are making an exception. He said to her quietly, but only for a moment or two. लेकिन अभी इतना सारा आर्ग्यूमेंट हुआ गार्ड और ग्रैनी के बीच में. आफ्टर दैट फाइनली जो मेडिकल ऑफिसर था, ही जस्ट चेंज हिज माइंड and he said that it is strictly against every rule because we don't allow the dogs to come inside, but as an exception to this case because the girl is in very serious condition, जो लड़की जो सैंडी है वो काफ़ी serious condition है में है, इसीलिए हम उसको allow कर सकते हैं. He said to her quietly but only for a moment or two. उसने क्या बोला कि हम ज़्यादा टाइम तक उसको अंदर नहीं रख पाएंगे. You can just take the dog and go and meet your granddaughter and then bring him back outside. Without a word, Lob followed Granny Pierce. So बिना कुछ बोले लॉब भी क्या करने लगा, ग्रैनी के साथ चलने लगा. So students, I hope that you understood the story till here. Now the remaining portion where there is a little bit of suspense, we would be covering that portion in the next video. Okay, and if you want, you can know the suspense over here. What is it? By reading the rest of the portion, you might get it. What is the suspense in the story? But I will explain you in the next video. Take care.